Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video, I will be dealing with intellectual property rights introduction part. This is very interesting subject. Just try to understand what subject says. आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए. सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. है क्या इसका मतलब? पता है आपको? You know. If you know, then very good. If you do not know, then this video is for you people. Okay? So dealing with intellectual property right. सबसे पहले, what is the meaning of intellectual property? If I break this definition into fundamentals, what comes out? It comes out to be intellectual plus property plus rights. Rights अधिकार, right रखिए इसे. आपको पता है इसका मतलब. Constitution पढ़ी है? Then you might be definitely knowing the meaning of right. Okay. So dealing with intellectual. Intellectual means creation of means mind. Simple. Intellect की जब हम बात करते हैं, हम deal करते हैं आपके mind से. It means when the person is having the distinguishing power, when the person knows, is well aware that what is right, what is wrong, that is your intellect. Am I right or wrong? Tell me. Oh, I can't hear you. सो ये इंटेलेक्ट के डिक्शनरी मीनिंग है. बहुत वेराइटीज ऑफ मीनिंग है उसकी. अगर जब हम इंटेलेक्ट, और क्या क्या मीनिंग हो सकती है? हमने बोला माइंड हो गया. ओके. और क्या बोला? हमने बोला डिस्टिंग्विशिंग पावर हो गया. अब अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्ट ओनली. वो क्या है? इंटेलेक्ट है. The ability to differentiate between what is right, what is wrong, that is intellect. The ability of understanding is also an intellect. The mind, brain, reasoning power, distinguishing power is all coming within the ambit of intellect, right? इसको हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट कहते हैं. अब जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? Intellectual property, see, a very common definition of it is that intellectual property is said to be as the creation of mind. क्योंकि जो भी आप अपने माइंड से, अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपने माइंड का इस्तेमाल कर कर आप जो भी चीज क्रिएट करते हो, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, अच्छा ठीक है, ये इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, everything or anything, whatever we people are creating using our intellect is said to be as the intellectual property. Okay, हमें समझ में आ गया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर हम बोलें और फर्दर डेफिनेशंस और क्या क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएटिव वर्क ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. क्रिएटिव वर्क है जो ह्यूमन अपने इंटेलेक्ट को यूज कर जो भी क्रिएट करेगा, दैट इज सेड टू बी एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इजी. ओरिजिनल. अब हमारे पास सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ ब्रॉड सेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट. दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी विच यू कैन टच, विच यू कैन फील इज सेड टू बी एज दी टेंजिबल प्रॉपर्टी. ठीक है. अब हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, हम सीधा सीधा बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड. ऐसी प्रॉपर्टी which includes immaterial things, means it is incorporeal property which we cannot touch it. Can you touch the creation of human mind? No, you cannot. While on the other hand, if I say, can you touch a building? So yes, you can touch the building because that is the tangible property covered under TPA. ठीक है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ ब्रॉड सेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो कि इंक्लूड, जिसका सिंपल सा मतलब है एनी प्रॉपर्टी which you cannot touch, which is having no physical appearance, that is intangible assets. और किसी की स्किल, किसी की नॉलेज को आप टच तो नहीं कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का देखें, सपोज आई एम राइटिंग अ पोएट्री, so that creation of mine is my intellectual property. Someone invented something, that invention is an intellectual property. There are many examples. When we will be covering more topics, you will get to know about it. ठीक है.
क्या सब्जेक्ट मैटर होता है कॉपीराइट का, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. These all are the intellectual property which we will be covering soon. Now dealing with, now जब हम लोग टाइप्स की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कितने टाइप्स होते हैं. सी इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज द कॉपीराइट एंड सेकंड इज द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. ऑलराइट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एज द नेम इज इटसेल्फ सजेस्टिंग दैट इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ठीक है, जैसे कि इट क्या क्या इंक्लूड करता है, ये पेटेंट्स को इंक्लूड करता है, ट्रेडमार्क, डिजाइन, प्लांट वैरायटीज, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, layout designs of integrated circuits, trade secrets, etc. is all coming within the purview of industrial property. Means it is related to business or manufacturing units. अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट it is dealing with the creative work which includes literary work, dramatic work, artistic work, musical work, cinematographic film, cinematographic works, साउंड रिकॉर्डिंग इज ऑल कवर्ड अंडर द कॉपीराइट. ये इसका सब्जेक्ट मैटर है कॉपीराइट का. ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्क विच वी विल बी कवरिंग अप इन द टॉपिक ऑफ कॉपीराइट व्हेन आई विल टीच यू पीपल अबाउट इट. ठीक है, तो कॉपीराइट क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड है. कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर अभी बताएं. यू पीपल माइट हैव गॉट you people might have got about that what gotten about that what I have said right now. तो अब क्या है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट दो टाइप्स हैं किसके, आईपीआर के. अगर मैं कुछ अगर एग्जांपल्स के साथ अगर मैंने अगर बोलूं, अभी इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था दैट आई हैव रिटन अ पोएट्री, दैट इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट विल कम अंडर कॉपीराइट, दैट इज माय क्रिएटिव वर्क. ऑलराइट, आप लोगों को पता होना चाहिए. सी examples के साथ one must study, everybody says this, you people should also study accordingly like that. तो आईपीआर दो तरीके, कॉपीराइट खुद में ही एक बिगेस्ट इसका स्कोप है, वहीं पे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी is very very broad and further classified into a patent, trademark, designs, plant varieties, etc. So you people should have idea about it. Intellectual property is allowing creators to, इस सिंपल से अगर हम देखें आईपीआर जो है ना, इट इज ओपनिंग द डोर ऑफ क्रिएटिविटी फॉर द क्रिएटर्स अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल एज वेल. दरवाजे खुल रहे हैं किस चीज के, क्रिएटिविटी के. इट इज मेकिंग, इट इज सेइंग पीपल टू क्रिएट मोर एंड मोर. यू माइट हैव एन आइडिया अबाउट, यू माइट बी थिंकिंग, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यू गॉट एन आइडिया, आपको एक आइडिया आया that you are thinking about A and B person. You are thinking about to write a poetry, for example, because I am very much interested in writing poetry. That's why I am taking an example of poetry. You people can take your example. Suppose I got an idea to write about love. Don't take it for granted. It's just an example. मेरे पास आइडिया है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि लव ये होता है, थीम है मेरी, एंड आई डिसाइडेड टू राइट ऑन इट. बी इज ऑल्सो अ पर्सन, ही ऑल्सो गॉट द सेम आइडिया, ही ऑल्सो थिंक, वो भी उसी तरीके से लव जो टाइटल है उसको उसी तरीके से इमेजिन करते हैं. सी एक पर्सन है, वो भी उसी तरीके से माइंडसेट, उनके पास भी आइडिया आया कि हाँ लव इज दिस एंड दैट. व्हाट आई डिड, आई राइट इट डाउन, मैंने उसे एक्सप्रेस कर दिया. I wrote a full poetry on the title love. B comes and sues me. वो बोलता है कि इसने तो मेरा आइडिया कॉपी कर लिया. क्या आइडिया के ऊपर कॉपीराइट मिलता है या नहीं, बताइए. It's just an introduction. I know that you people haven't studied it completely. So answer is, express किसने करा, express तो मैंने करा, right? I have written the poetry and he just got an idea and I also got an idea, but मैंने क्या करा, उसको express कर दिया in writing. So who will be having the copyright of that work? I wrote that work
and brought it in the public domain. I will be having the copyright. That person can't sue me because you were just having an idea. I was having an idea, plus I expressed it and I have published it accordingly. So who will be having the copyright? I. So IPR is opening the door of creativity for the people. Whatever you are thinking, whatever you are having your own creativity, just publish it, just write it. It encourages and people to create more and more. So whatever you people are having any kind of, if you people have any kind of original work of yours, try to publish it and get copyright of that work. So IPR डील करता है creation of intellect के ऊपर. Whatever you people are thinking, whatever idea you people are having, just express it. Copyright बनाओ अपना उसके ऊपर you will be getting the copyright over your work. So that's it. It is very good subject. It rewards. See, IPR is rewarding the creativity. You people will be, you might be well acknowledged about that video. And if you people have any doubt, do let me know below in the comment box. Do like and subscribe my YouTube channel for more videos. ये तो just introduction था. हम और videos cover up करेंगे इस particular IPR subject से related. Okay. Thank you so much. Bye bye.